Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Fidelitarian IAS इंडियन पॉलिटी के 2000 MCQ की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं. दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 52. 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन we already have completed. This is a standard template that we are using across the videos. The first question: consider the following statement about union territories. If the governor of a state is appointed as administrator of a union territories, then he shall act independently to his council of minister in regard to that union territory. So that is a correct statement. अगर सपोज महाराष्ट्र के जो ये है आपके गवर्नर राइट, अगर उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है लक्षद्वीप का सपोज एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो जब वो लक्षद्वीप के रिलेशन में जो भी डिसीजंस लेंगे तो वो उस टाइम महाराष्ट्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे. ठीक है, सो दैट इज अ करेक्ट. इन रिलेशन टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स करेक्ट. सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट. वी हैव टू tell the correct statement, hence C is the right answer. Consider the following statement regarding office of governor. The governor is an integral part of a state legislature, that's correct. The only qualification for the appointment of governor are that he should be citizen of India and must have completed 30, that's correct. One person can be appointed as governor of maximum 2 states, that's incorrect. ऐसा कोई सीलिंग नहीं लगाया गया है कि सिर्फ 2 स्टेट का ही गवर्नर जो है, एक पर्सन जो है सिर्फ 2 स्टेट का ही चार्ज ले सकता है. सो करेक्ट बताना है, hence 1 and 2 is going to be correct and B is the right answer. International Labor Day 1st May, SSC टाइप का सवाल है. Consider the following statement regarding the composition of Legislative Council, that is upper house, and pick the correct statement, correct options. The total number of members in the LC Legislative Council of State shall not exceed 1/4 of the total number of LA size legislative. No, that's correct. 1/3 यहाँ होना चाहिए, ना कि 1/4. One of the total members, number of members of the legislative council, nearly as many as 1/6 shall be elected by the electoral consisting of municipalities. No, this is also correct. 1/6 की जगह 1/3 होना चाहिए. So both the statement happens to be incorrect. We have to tell the correct statement. So none of the above is going to be the answer. Correct. Choose the incorrect pair from below option. Article 57 term of the office of president, correct. Article 59 condition of the president office. Article 66 election of the vice president. All these 3 statements are correct. Article 68 oath and affirmation of the, so this is incorrect and hence D is going to be the right answer. The 12th schedule contains which of the following functional item placed within the purview of municipalities? So you already know 11th schedule contains around 29 items, 29 functional item, and 12th schedule similarly for the municipalities contains 18 to 19 functional items. ठीक है, तो उन functional item में से 3 items दिए गए हैं और पूछा गया है कि उन क्या वो तीनों के तीनों उन 18 का पार्ट है. अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग, दैट्स करेक्ट. रेगुलेशन एंड लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, दैट इज आल्सो करेक्ट. रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टैनरी. सो ऑल दीज 3 आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट 18 or 19 functional item that is mentioned into the 12th schedule. So all 3 statement happens to be correct, hence D is the right answer. Which of the following report are led in parliament by president? Annual financial statement, that is budget, yes. Recommendation of finance commission, yes. Report of commission of backward classes, yes. Report of special officer for the linguistic minority, that is also correct. So all 4 statement happens to be correct and hence D is the right answer. Consider the following statement. 4 statement has been given and what we have to tell, which of the above statement are correct if the prime minister of India belongs to the upper house of the. So अगर प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं और कौन कौन से करेक्ट है. He will be able to vote in his favor in event of no confidence motion. No, he will not be, because for a person to be able to vote into the no confidence motion, he or she should belong to the Lok Sabha. He will be able to speak on the budget. Yes, he will have every right कि भाई अगर कोई मिनिस्टर है, डज नॉट मैटर किस हाउस में है, दोनों में पार्टिसिपेट स्पीक कर सकते हैं, बस वोटिंग नहीं कर सकते. ही कैन मेक स्टेटमेंट इन बोथ अपर हाउस एज वेल, दैट्स करेक्ट. ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्वर्न इन. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर राज्यसभा के कोई मेंबर हैं और वो प्राइम मिनिस्टर अगर अपॉइंट होते हैं तो राज्यसभा के मेंबर ही रह सकते हैं लगातार, उनको लोकसभा का मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू बी प्राइम मिनिस्टर और इन ऑर्डर टू एंजॉय कंटिन्यूड ऑफिस इन द
prime minister. ठीक है, so 2 and 3 is correct statement, so B is the right statement, right answer. Which of the following condition of governor office are correct? The governor shall not hold any office of profit, that's correct. The governor shall not be member of either house of the parliament or house of legislature, that's correct. In case of same person is appointed as governor of two state, the emolument and allowances payable to the governor shall be equally shared among the state. No, that's incorrect. Equally shared, no. So that will be decided, that will be determined by the parliament कि किस स्टेट ने कितना शेयर करना है. हो सकता है 60-40 का रेशियो रखे, हो सकता है 65-30, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टेट एंड द एक्सचेकर, स्टेट एक्सचेकर प्राइमरली प्रेसिडेंट डिसाइड्स. ठीक है, सो दैट्स इनकरेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट आपको को बताना है. सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. ए, which among the following Indian was appointed by UN to a fact-finding mission investigating alleged torture by security forces against. तो ये ओल्ड क्वेश्चन है. जब म्यांमार में राखीन इशूज़ में जब रोहिंग्या का डिपार्चर, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है. उस टाइम इंदिरा जयसिंह जो है, ये ओल्ड क्वेश्चन इस 20 वाले में नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो हाउ इट हैज़ फाउंड प्लेस हियर, बट एनीवे इंदिरा जयसिंह इज द आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 73rd कॉन्स्ट. 73rd डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी. सो दिस kind of flowery language you can use, always use into the mains. I hope what is this representative democracy, what is this participative democracy, all these things you would have read, right? All these things, although लक्ष्मीकांत में participative democracy and इन चीज़ों की चर्चा नहीं है, but अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों ने एडिटोरियल में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज इनेबलिंग आवर डेमोक्रेसी टू मूव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू अ participative democracy where every stakeholder, where every citizen who happens to be a voter does find a mechanism to have his say into the decision making. So first statement is correct. It created uniform panchayat law for the whole of India. No, uniform panchayat laws nahi. PISA का system है. There are many areas, scheduled areas, tribal areas where provisions of panchayati raj or provisions of 73rd constitutional amendment does not apply in toto. ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो कि सूट कर सके, कुछ टेलर्ड रिक्वायरमेंट के साथ जो कि सूट कर सके, एंड देन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल. आई होप यू वुड हैव हर्ड ऑफ PESA 1996. ठीक है, सो यूनिफॉर्म पंचायत लॉज, नो, दैट्स इनकरेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली हैपन्स टू बी करेक्ट एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट, हेंस A is the right answer. Who all among these are part of Union Executive? President, Vice President, Prime Minister, Attorney General of India. So 4 dignitaries, and all these happens to be part of Central Executive. That is D is the right answer. Consider the following statement. 3 statement has been given and we have to tell the correct statement. Concept of Lok Adalat traces its genesis from part 4 of the constitution. That's correct. I hope part 4 क्या है आप लोगों को पता होगा. ठीक है, part 4 deals with the DPSP. Now DPSP में कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वल जस्टिस के साथ या जस्टिस के साथ डील करता है? आई होप आर्टिकल यू वुड बी रिमेंबरिंग. ठीक है, तो लोक अदालत जो कि इक्विटेबल जस्टिस के लिए बनाई जाती है या स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए जो बनाई जाती है, ठीक है, वो कैसे अपना इंस्पिरेशन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो आप लोग थोड़ा सा ट्रेस कर लेना. अगर DPSP आप लोगों ने बाय हार्ट पढ़ा है तो अभी तक समझ गया. Sorry, Lok Adalat has been given statutory status under Legal Service Authority Act 9. बिल्कुल सही. Decision made by the Lok Adalat is considered to be a verdict of civil court and is ultimate and binding on all party. That is also correct. So all 3 statement happens to be correct. D is the right answer. That is all of above. What are the advantages of being recognized as a national or state party into the India? They get subsidized land for the party offices. They get reserved symbols, free airtime on Doordarshan and All India Radio. That's correct. Supply of electoral roll copies free of cost during the election. That's correct. A national party can have maximum. So all these provisions are or all these are benefits that a national or recognized state party does get in the India. Okay, so all 5 statement happens to be correct and hence again D is going to be the right answer. Consider the following statement regarding Business Advisory Committee of the Lok Sabha. It consists of 30 members? No, it does consist of only 15 members. The speaker is ex officio chairman
of the committee, so that is correct. The members are selected, no, they are not selected or elected, they are actually nominated by the Speaker of the Lok Sabha. So only second statement happens to be correct, and hence B is the right answer. Choose the correct statement regarding the Gram Sabha. It is a body consisting of persons registered in the electoral roll of village comprised within the area. So that's correct. It is a village assembly consisting of all registered voter in the area of the panchayat. That is also correct. So answer would be C, that is both A and B. Match the following cases with landmark judgments. Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura. So this was related to your curative petition, B. So one would be B. Okay, Naz Foundation versus government of NCT of Delhi. So this is actually section 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस केस में ठहराया गया था. So 2 should be D. Okay, so आपका 1 हो गया, 2 हो गया. PUCL, तो PUCL जहाँ भी इन्वॉल्व होगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होगी. So PUCL 3 and it will be like introduction of nota, right? So 3 would be A. PUCL जहाँ भी इन्वॉल्व है इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह की या इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी, ठीक है. सो फोर्थ ऑटोमेटिकली बिकम्स B, A, D, C. फोर्थ वुड बी C. सो 1B, 1B, 2D, 1B, 2D, 3A and 4C. So B is going to be the right answer. Consider the following statement. 2 statement has been given and correct statement. The total number of ministers including prime minister shall not exceed 10% of the total member of House of People. That's correct. Incorrect, sorry. 15% की ceiling रखी गई है by 91st Constitutional Amendment 2003. It's not 10%, it's 15%. Constitution provides that Council of Ministers is collectively responsible to the House of People. So that's correct, ठीक है. House of People, that is लोक सभा के लिए collectively responsible होंगे. So second statement is correct and hence B is going to be the right answer. Next question. Consider the following statement regarding anti-defection law and we have to tell the incorrect statement. Sorry, a nominated member of the House becomes disqualified on the ground of defection if he joins any political party after expiry of 6 months of his nomination. So that is correct, ठीक है. दैट इज यस, दैट इज करेक्ट, ठीक है. इफ यू हैव एनी राज्यसभा मेंबर जो कि नॉमिनेट हुए हैं तो विद इन 6 मंथ्स अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ही और शी इज वेलकम टू डू दैट. बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स इफ दे आर इंटेंडिंग टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी देन देयर मेंबरशिप विल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड. मेंबर ऑफ द हाउस आफ्टर बीइंग इलेक्टेड as presiding officer of the house will not be disqualified if he voluntarily gives up the membership of this party. So that is also correct. अगर स्पीकर चुने जाते हैं, अगर कोई मेंबर है वो स्पीकर चुने जाते हैं और वो अगर रिजाइन करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जिनके टिकट पे वो एमपी बन के आए हैं, सो इन दैट केस हिज और हर मेंबरशिप विल नॉट गो. दैट इज अ प्रोविजन दैट हैज बीन kept in anti-defection laws, keeping कि भाई वो बंदा न्यूट्रल रह सके. जो पर्सन स्पीकर के पोस्ट पे जा रहा है वो अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना चाहता है तो न्यूट्रलिटी को इंटरेस्ट में रख के ये किया गया है. सो दैट इज करेक्ट. 91st Constitutional Amendment Act of 2003 deleted the provision of anti-defection law pertaining to exemption in case of merger by 1/3 of the member of the party. So that is also correct. So incorrect इसमें कुछ भी नहीं है and that's why C is going to be the right answer. That is all are correct. 1040, the world's highest railway bridge which will be taller than the Eiffel Tower would come upon the river. तो recently अभी उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है. हालांकि अभी पीयूष गोयल जी ने उसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया था, हालांकि स्टार्ट नहीं हुआ है बट कुछ डेवलपमेंट्स अभी 1.5 महीने पहले ही हुए हैं, 1.5 months बैक. So that was on river Chenab in Kashmir, right? So A is going to be the right answer and with this we are wrapping up this session as well. Meet you into the next session. Till then, bye bye.